Dr. Mufti Mahmood, and he's currently working as an associate professor at NTU, Nottingham Trent University, England, UK. So this is, I think he has presented this topic in a very good method, and I really want to quote his work here. So that is how I have not removed the tagline even. So starting with the outline, yes, we have the machine learning basics. First of all, we'll discuss little bit of them, that what is the difference between supervised and unsupervised learning. Then there comes the linear and nonlinear classification methods, that what, how, and when we need the classification to be linear in nature, or otherwise how the classification deals with the nonlinear data. Most of the time, I think many of the students or many of the researchers, they have worked with the nonlinear data, so they think that classification will work only with the non-linearity, whereas linearity works with the SVC. For example, if we have the SVM classifier, then this is for non-linear, and when it comes to linear data, we go for simply SVC classification, that is support vector classification simply, right? Then is what are the different deep learning techniques, how are the elements of neural networks, what is the activation function, how to train them, how to like regularize them, what are the different architectures, and as a case study we will discuss that what is the architecture of convolutional neural network. So to start with, these are the sources from which the data has been taken. So for any discussion or any, you can say, data in depth, you can follow these tutorials and you can follow these slides as well as these citations from where I have taken the data. So yeah, these are the basic deep learning, and different CNN or tutorials are also there, so you can follow them. So machine learning basics, if we start with, it comes with the artificial intelligence. In one of the conversation, I don't know where I have given the lecture. So one of the student asked a very intriguing question that, that AI is okay, but ma'am, we have various CAD, that is computer assisted diagnostic systems, and we have the different expert systems. So how do you differentiate between them? So whenever we have to, he was writing, I think, a review paper, so he was about to confirm that from, like, in what angle we have to cover this. So artificial intelligence is not machine learning, not deep learning, but artificial intelligence is, let's say, when you impart any intelligence to the machine. So expert system is a part of AI, CAD is a part of AI slash CAD. Then second number is ML, then third is DL. So where ML is the subsystem of this, DL is the subsystem of this, because you, for ML also, you have to make it as an expert system or computer aided diagnostic system. Into that, whatever the data you are going to work with, that you have to apply the machine learning algorithms. But initially it has to be an expert system, or any of the new term which we called as decision making system or cognitive system, right? These are the terms which are replacing the computer assisted diagnostic system as the expert system or decision making system or recommendation system can also be there, right? Decision making system. If anybody do not want to work with a decision, then you can simply say cognitive system. If it is related to literally the thought process or the decisions that are involved, that are actually not required to be taken by the humans, but the system will take the decision on its own. So AI is basic field that is concerned with the development of the algorithms that allow the computer to learn without being explicitly programmed, right? So expert system is a part of AI, it is not different from that, whereas machine learning is a branch of AI which that focuses on learning from the data and make the predictions on unseen data. So for example, you have any of the data with you, let's say, if I do not have the machine learning, or if I have to make a simple expert system, I think you people have little bit knowledge of fuzzy system. So fuzzy is basically rule based system. Just give me a second. Hello. Hello.
Yeah. So this is a fuzzy. So if I'll talk about the fuzzy system, right? So then we have the rule based system is basically the fuzzy system, right? Fuzzy system, if we do not talk about the machine learning, so it's a rule based system. What is a rule based system? Like if you have if else condition, like if this else this, right? You have this looping criteria. But in case of fuzzy, we just directly formulate the rules that if, for example, you have to make a washing machine. I guess many of the examples have been taught in the fuzzy. If cloth is white, है ना, whatever the conditions we want to have, cloth is white and the level of dirt is medium. Let's say level of dirt is medium. You have to like classify it like this only, like medium, low, high, low, medium, medium, high, extremely high. You can make them high, then ultra high, extremely high, right? So similarly, you have low. This is medium. Yeah, this is medium high. Then this is medium, and इसमें आ जाएगा low, and then it will be ultra low or extremely low or small, something like that. So these are basically the extensions to which we can actually extend our data, or we can make the data more, right? Otherwise आप तीन केसेस में लो मीडियम हाई में अगर इसको क्लासीफाई करोगे कि डर्ट लेवल इज लो तो मशीन 3 नंबर पे चले, डर्ट लेवल इज मीडियम तो मशीन 6 पे चले, हाई है तो 9 पे चले, तो आपके काफी कंफ्यूजिंग मशीन बन जाएगी, बीच के नंबर सारे you'll not have. तो अगर लो मीडियम है तो 4 to 5 में आप कहीं पे भी कर सकते हो, अगर मीडियम टू हाई है लेट सपोज तो आप 6 पे तो ये चलेगी, तो 7 to 8 में आप कोई भी रख सकते हो, एक्सट्रीमली हाई जो है वो 10 पे चलेगी, लेट से इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, राइट? So 0 to 2 is for extremely low. So then you can define the different levels. More the levels, more the data, more the user will be happy, right? Similarly, machine learning data is also with more data. When you have very particular actions defined for something, then you go with the expert system, right? You do not need any intelligence in that. अब अगर washing machine है, उसमें आप कपड़े डालोगे तो भी धो देगी, जूते डालोगे तो भी धो देगी, right? If you put let's say सब्जियां डाल के आप उसमें, if you are making it wash, even then if you make the spinner side or the wash side, you will just put the vegetables, put the detergent, put everything there, and then you make it at 3, it will keep on rotating. It has nothing to do with that what is your input. What it has been programmed with, that once the power supply is on and the user is giving you the input that it is low dirt, it is medium dirt, it is high dirt, it will operate. It will not be able to sense that, oh user, your input is wrong. That is the work of intelligence. So this is how these systems are open loop systems, or you can say that when it comes to the control systems, if we make a corresponding to them, because there is no feedback, and also based upon the low data, you can call them as the non-intelligent or non-smart, in not intelligent and non-smart systems. So they can also work like that. So then is the like expert system, which they can work with the data. They are quite different from fuzzy. So fuzzy का अगर advanced version में देखूं, fuzzy system is also an expert system. But computer aided diagnostic, if we have to make, then we can't apply fuzzy, because fuzzy can one of the approach when your data is not too complex. Let's say आपने मेल जो है वो स्पैम है नॉन स्पैम है चेक करना है, तो ठीक है आप फजी लगाओगे, लेकिन उसके लिए एक रूल डिफाइन होगा. सिंस आजकल मेल राइटिंग का पैटर्न जो है ना, दैट इज गेटिंग चेंज्ड अगेन एंड अगेन, देन योर फजी विल फेल, इट विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई, बिकॉज आप उसको इफ बता सकते हो, हाउ मेनी रूल्स यू आर गोना राइट, राइट? आपने 5 तरीके बता दिए कि इन इन चक्रों से पता लग सकता है, इन इन कीवर्ड से वी कैन आइडेंटिफाई दैट दिस मेल इज गोइंग टू बी स्पैम, right? But market may, as the user, as the people, they want to establish their business. Spam is not always that it is going to fish you or something like that. Spam could also be the informative mail, or sometimes the conferences, yeah, na, international conferences, because they have to send any number of the emails to, so that they can reach out to good people. And similarly the business people, they have to make, so that can also go to spam. So your system will identify that, because when one mail is sent to, let's say, 10,000 people in a short span of time, then eventually it's put under the category of spam.
So fuzzy can bifurcate it on the basis of 1 2 3 4 5 points. But what if it is, any new person will come with the new formation of the email? So intelligent system learns that. It will include that intelligence, that data, because we will provide it with so much of the data, and then we will try it and train it on the random data. What if it is, for once it will skip, ऐसा नहीं है कि it can never make the mistake, no, but it will learn from the data. So let's say इसने spam में नहीं डाला, बाद में हमने अपनी मेल को spam में डाला, then the system will learn that okay, this was the mail that has been put in the spam, so spam has got the new data and it will update it accordingly, right? फॉर एग्जाम्पल नोकिया 11 फोन था पहले, नोकिया 1100, वो जो छोटा आता था ना, नो कैमरा, उसमें अपडेट्स कहाँ आते थे? कुछ भी नहीं होता था, सॉफ्टवेयर भी नहीं होता था उसमें इतना, जो भी था वो फेड होता था बाइनरी लेवल पे. सो यू नीड नॉट टू हैव दी अपडेट्स, उसमें सीधा फोन ही नया आता था कि ये मार्केट में जो नया फोन आ गया दैट इज अ बेटर वर्जन ऑफ दिस. बट अभी आपके फोन्स में जैसे अपडेट फोर्सफुली भी होते हैं, या जैसे कंपनीज प्रपोज करते हैं, आप खुद अपडेट करते हो, सो बैक एंड पे सिमिलरली एमएल कैन ऑल्सो बी अपडेटेड कॉरेस्पॉन्डिंगली, right? So machine learning algorithm, it can provide you a learned model, but it works on a labeled data. When it works on a labeled data, that is called the supervised learning, right? When it works on the labeled data, so that we call as the supervised learning. So labeled data is there, and then we can do the prediction from that particular data. So machine learning types, we have supervised, unsupervised, and reinforcement learning. In the supervised learning, I told you that we have the labeled data. For example, email classification, image classification. This comes under the category of classification. Supervised can do two things. One is classification, another is regression versus regression. So what is classification and what is regression? Classification is when you have to differentiate like two. This is A and this is B. But what is regression? When you have to provide any output, that this next step output will be 1.41, next step output will be 1.52, something like that. When you need the output in the form of a data, then we go with the regression. Then is the unsupervised learning. So unlabeled data will be there, and in that you can't classify, you can't regress, but you have to make the clusters of the similar data points. So it will form the patterns like this. It will make the clusters, and from this you will come to know that okay, इसमें तीन तरह का data है. But ये data क्या है? If you don't know the data, you can never know the classification, the clusters. जैसे मुझे ये पता लग गया इसमें दो क्लासेस हैं, नाउ एट द बैक एंड आई नो कि मैंने इसे डेटा क्या दिया. बट अगर आप कोई, आपके पास डेटा की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यू डोंट नो द आउटपुट, सो आपको पता लग जाएगा कि ओके इस एरिया में कुछ तीन तरह का डेटा है. देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ओके पैटर्न क्लासिफिकेशन की वजह से हमारे पास जो डेटा कॉलम्स में हमने आया, कहीं कहीं आपको नाम दिख रहा है, कहीं किसी का रोल नंबर दिख रहा है, कहीं किसी की ईमेल आईडी दिख रही है, तो आपको पता लग जाएगा ओके तो ये स्टूडेंट्स का डेटा है जिसमें कुछ नेम है, ईमेल आईडी है, और तीसरा ग्रुप माइट भी किसका हो सकता है, लेट्स से रोल नंबर का. ठीक है, सो लाइक दैट, सो इट कुड बी लाइक दैट. नेम है, अकाउंट नंबर है और मोबाइल नंबर है, तो आपको लगेगा हाँ ये अकाउंट नंबर है तो इट कुड बी द बैंक इन्फॉर्मेशन, राइट? So you will have the clusters, but you will not have the clear output that what it is about. Then is the reinforcement learning. It will learn to act on the feedback or the reward. So this learning is a type of both. It mix and matches the both things where the data, इसमें डेटा पहले से होगा, डेटा पहले से होगा दोनों में. बट इन केस ऑफ reinforcement learning you have to collect the data, just like you can play the chess game, the card game, right? So we have that Go Alpha game is there, Google's Go Alpha game is there. So that they collect the data on the basis of state and reward, right? So they collect the data on the basis of state and reward, and corresponding to that, they first collect the data and then they can work on the data as an algorithm, as a learning algorithm, right? So if you have the text, let's say you have to classify. I told you that class A and class B. If you have to regress it, see its y value is there, and there is a covariate value, that how this value is going to variate with when you are providing the next output. So this is the true line is the best fit line. Sorry, true line and the best fit line. What are they? True line is the actual that I know that this ये output आनी चाहिए. But best fit is like I have trained my model. My model can, like, to the best of the model accuracy, it can provide me this line, right? So my like this. So then as per my accuracy, as per the different performance metric parameters, I'll find that whether this best fit line
can work for me or not. If not, then I'll tune or I'll optimize the model. So tuning or hyperparameter tuning is there, optimization of the model is there. So I'll apply different methods so that के इन दोनों का difference जो है वो कम होना चाहिए. So one is true line and one is the best fit line. This is our major work. जितना इनका difference ज़्यादा होगा, this is what you can see is that they are merging together and then going away. The red line is either overlapping with the green or going away. So this is how it is showing that how the data will look like if you are providing the best fit line equal to the true line. There will be zero error and the data accuracy detection model will be very good. And then is the clustering. I told that it will formulate the groups, but it cannot tell us कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, जबकि ये बता सकता है कि ये क्लास ए है और ये क्लास बी है. इसमें it will form the clusters but can never tell us that what cluster particularly belongs to unless and until you know the data by heart, that okay, this is the data. So in case of the supervised learning, you have numerical classifiers where you can work with linear classifier, perceptron model, logistic regression, sport vector machine, and neural network. For the like when you have parametric or probabilistic function, where you have the probability simply. For example, you have boxes, you have triangle, you have circle, right? Then what is the probability कि output में square shape आ गई क्या, sorry, rectangle shape है या square, what is the probability of these shapes of occurrence for this? So that will be how many cases are there? 4. So 2 by 4. For square 1 by 4 and for rectangle is 1 by 4. Now if you have this type of the very certain data where when the input, let's say I have introduced this, then only this will change 2 by 5. So this change will be depending upon the machine learning thing कि ठीक है भाई output यहाँ change होनी है, लेकिन which shape is there, that it will classify on its own. So this is called the probabilistic information is there when you do not have any other variable. जैसे suppose star आ गया तो इसने क्या करना है, इसको नई क्लास में ये डाल देगा. ऐसा नहीं है कि it will like the system will stop working. No, it knows that it is working on the shapes, so it will give it as 1 by 6. सबकी नीचे एंड पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा. So when you have this probabilistic information where only this thing is directly proportional to the output, but no other variable or any non-variable thing is there, you can say linear thing is there, then you go for the probabilistic functions, which are naive Bayes, Gaussian discriminant analysis, hidden Markov model, or probabilistic graphical model. These are the models. I think you should actually you can note them down so that you should know कि कौन सा model कब लगेगा. When you read the literature, we don't read the data. We see the problem. We see okay, cancer detection is there. इस बंदे ने लेट्स से डेटा सेट ए यूज किया, डेटा सेट बी. वी नेवर अंडरस्टैंड कि इस डेटा का लीनियर था कि नहीं था. हम कहते हैं अच्छा मेरा भी डेटा ए ही है, ठीक है, इसने कैंसर के लिए ये मॉडल लगाए हैं. फिर दूसरे बंदे ने बी डेटा सेट किया, आपने कहा ठीक है डेटा तो वही होता है, इसने मॉडल ये लगाए हैं. आप एंड में इनको मर्ज करते हो और आंसर निकालने की कोशिश करते हो. कई बार आपका मॉडल ट्रेन नहीं होता, फिर आपको लगता है हाउ कम कि दिस पर्सन हैज used this model and his output is coming. Why? Because he has worked on this. For example, you should know whether your data is linear. So what are the different type of the models that can be applied for the comparison? Whether your data is probabilistic directly, then you can apply for these methods. Whether your data is non-parametric, right? Then you can go for KNN, kernel regression, kernel density, and logistic regression. If it is about the symbolic functions, then you should apply if it involves any of the decision making stages with the symbols. Then you go with the decision tree classification and the regression trees. CART is a different form of the symbolic function representation only, where you mix the classification and regression. So that comes under the symbolic functions. Then is the ensemble learning. So ensemble is basically when you go with the averaging. So averaging में अगर आप सबसे best model देखोगे, maximum utilized is random forest. Bagging, boosting, ADA boost models are also applied, but generally they are kept for the regularization purpose. Whenever you have overflow of the data, or you can say that your data model is overfit. So we generally use the averaging. So to avoid the overfit, regularization is done, which is bagging and boosting of the data. So random forest is basically averaging.
टेक्निक वेयर आप डिसीजन ट्री लगाते हो, ट्रीज को इकट्ठा करके लाइक फॉरेस्ट बनता है। तो आपने डिसीजन ट्री वन, डिसीजन ट्री टू, डिसीजन ट्री थ्री सबको लगा के आपने क्या करना है, एक रैंडम फॉरेस्ट बनाना है। सो दिस प्रोसेस, अब आपने इनको ऐड कर दिया, इनके आउटपुट्स को आपने उनका मीन मैक्स ले लिया, आपने एवरेज कर दिया। हाउ यू आर डूइंग दैट, दिस इज कॉल्ड द ensemble, right? Ensemble is aggregation. Sometimes you take the average of the output. So how you are aggregating them? Aggregating is submission them. So this is the ensemble technique. So this all comes under your supervised learning. Then comes the unsupervised learning. So its categories and techniques are clustering, density estimation, and dimensionality reduction. So this is not only like when you work with these things, you should know that whether we are using the unsupervised method or whether we are using the supervised method. So these are the clustering methods. This is Gaussian mixture model or graphical models. They provide you the density. Like if you have to work with कि यहाँ पे population density निकालनी है आपने, या फिर आपने density of let's say water level density निकालनी है कि C से जो हाईली डेंस्ड एरिया है और मॉइस्चर के बेसिस पे, टेम्परेचर के बेसिस पे आपने क्या क्या उनमें करना है। सो यू कैन गो विद डायरेक्टली द ग्राफिकल मॉडल्स विच कैन क्लासिफाई देम। देन इज डायमेंशनैलिटी रिडक्शन मीन्स यूर डेटा इज लेट्स से एन डायमेंशनल डेटा, बट उसमें क्या है कि काफ़ी ऑफ मैनी ऑफ देम और मैनी ऑफ द डायमेंशंस they are interrelated and they are providing the same information. So but they have what, they have occupied the space, they have occupied the columns, they have make the data more in number and more complex as well. So we apply the principal component analysis. What it basically does, it finds the correlation. If the data is found correlated, then it will reduce that, because at the end we will take the data which is not correlated. So PCA की output आएगी, variance जो है high होगी जिसमें data की, means if the data is not correlated. So wherever the correlation is found, we will keep only one particular sample. Let's say ये matrix है, हर एक अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको पता लग रही है, यू अप्लाइड पीसीए टू इट, पीसीए मेथड टोल्ड यू that okay, this is 1 1 and 1 and this is 1. So wherever you get 1 means this row and this column is providing the same data, so either I can keep it column wise or I can keep it row wise. Similarly you can go with like this. Okay, so in this way it reduces the reduction. Then comes the factor analysis. So factor analysis just आप इसको you can also work like, for example, if you have s square plus 2s plus 3, you factorize it, right? What you do, you have reduced the dimensionality. One is, I'm just giving a very basic example, don't take it by heart, otherwise factor analysis in this means you have to work with like statistical methods can be applied, where you actually work that what are the different variables x y z t, और what are the different parameters that, and उनमें से एक पैरामीटर को हम किसको हटा के दोबारा we can find out. मैं सिंपल एक ये बताती हूँ, जैसे s square plus 3s plus 2 है, अब इसको एनालाइज करना है, why we do the factorization, so that we can reduce the power, so we can have s plus 2 and s plus 1, s square plus 2s plus 3s plus 2. So this is like how, so we have reduced the dimensionality and now it is easy to work with these two things. Now we have reduced the parameters also. So this is how it works with the dimensionality reduction. Then comes the linear versus non-linear technique. I told you that linearly separable हैं, जैसे y is equal to mx है, right? Linear कैसे पता लगता है हमें? Par is 1 1. If y is equal to, मैं बोलूँ इसको कि 4ax square है, this is, you know that this is a parabola. So this is 1 and 2. इसके बाद if par keeps on increasing, then the data will become non-linear. Linear data है तो आप simply उसको लाइन फिट से बेस्ट फिट लाइन निकालो एंड यूर डन. ठीक है, अब नॉन लीनियर डेटा है, कंसेप्ट वही है, हमने निकालनी बेस्ट फिट लाइन ही है, बट पहले डेटा को नॉन लीनियर को हम क्या कर सकते हैं कि कर्नल होता है ना, आपने वर्ड ये सुना ही होगा कर्नल. कर्नल क्या करता है, इट इंक्रीजेस द डायमेंशनैलिटी, लाइक ये 1D डेटा को 2D में कन्वर्ट कर देगा, 2D को 3D में, just like you see the movies, you see what 3D glasses are there, 5D glasses are there, 7D movies there, right? So they अगर आप सामने से देखोगे आपको लगेगा ओके एलिफेंट है, जब आप उसको पूरा 3D में देखते हो तो यू कैन सेपरेट द एलिफेंट फ्रॉम अदर स्पेस डोमेन. सो लीनियर सेपरेबल मतलब आपको दिख रहा है, लेकिन अगर आप वैसे पिक्चर बनाओ, आप एलिफेंट का मान लो इट इज अटैकिंग मोड दिखाना या कुछ करना है, तो उतना इफेक्ट नहीं आता उसका, बिकॉज वी कांट एज्यूम और वी कांट इमेजिन कि लीनियर में ये कैसे दिखेगा. सो नॉन लीनियर को
नॉन लीनियर दिखाने के लिए, so that we can separate it, we use the kernel. Kernel increases the dimensionality of the data, 1D को 2D से शिफ्ट करता है, 2D को 3D से. अब देखो ये डेटा था, यहाँ पे सेपरेबल है ये, राइट, वी कैन सी इट, बट आई कांट डायरेक्टली ड्रॉ अ लाइन. फॉर एग्जाम्पल मुझे बेस्ट फिट लाइन ढूंढनी है, क्या ये बेस्ट फिट लाइन होगी? नो, बिकॉज इसने ग्रीन सारा इधर रह गया. अगर इसका मैं बेस्ट फिट लाइन ढूंढूंगी तो एज पर द रूल ऐसे आएगा, बट ऐसा हम बेस्ट फिट लाइन बना कहाँ, टेंजेंट खींचते फिरोगे आप सबके साथ, कंपैरिजन कैसे करोगे? बेस्ट फिट लाइन तो यही होती है. सो हाउ यू डू इट, विल प्रोवाइड द कर्नल. उसके बाद हम इस तरीके से बेस्ट फिट लाइन ढूंढेंगे कि वेयर इट इज, दिस इज एक्चुअली, this is circular line, this is also circular, but it is appearing like that, otherwise it has separated them like this, right? So this is how kernel helps us in finding the best fit line for the non-linear data, right? So this is linear versus non-linear technique. You can see that what are the linear classifiers and what are the non-linear classifiers, and you can work correspondingly, right? You should know your data, and then you should know what classifier can be applied, and then you can directly work on, right? Data is your linear, but you are applying the non-linear approaches, then that is of no use, because linearity is there and you are making the data look like linear in higher domains. It means you are just increasing the complexity of the model. You know the data is linear, but you are adding the kernel approaches. Here k is kernel only, k nearest neighbor. So non-linear SVM, neural networks, you have applied different complex neural networks. वो क्या करते हैं कि complex neural networks ने करना वही है, best fit line they'll find, but they'll find in a different space, right? So you are making your 2D or 1D data to work in 3D, 5D or 7D में जाके अगर आप classification करते हो, so you are just increasing the model complexity, it could be lack of your knowledge and you are just wasting the time. So better is to first of all find your data and then correspondingly select the good classifier correspondingly, right? So this is the ML part. Just 5 to 6 slides I want to give so that you should know that what we are doing with the expert system, computer vision, computer aided diagnostic tool, machine learning, all these are the branches of AI only, right? Then comes the deep learning. So deep learning is further a branch of AI and a subset of ML, right? Then conventional machine learning methods, they basically rely on human design feature representation. This word is important. Let's say I have to make a model. Today is Monday, so we have got only one lecture on deep learning. But anyhow, if it is an advanced course for deep learning, you should know that how the ML model works. Can anybody tell me that what features it is actually talking about? You know, human design feature representation. What are these features? Am I audible? Yeah. Okay. So anybody? Any right wrong input will work for me. Let's make it little interactive.
Okay, at least you can reply no if you don't know so that I can work on it. Otherwise, I'll go ahead. Anybody can unmute any of the participant. If you don't know the futures, just tell me. Okay, tough audience. Okay, fine. I'll proceed. First of all, we have to pre-process all Yeah. pre-processing. Okay, I'll write as per your input. May I know who is speaking? Dr. Gyan. Okay. Hello, ma'am. Okay, so I'll write your steps. Yeah, here we go. And yep, there we are. So you are saying that in this model, first step is pre-processing, right? Then number two, Feature engineering. huh? Feature engineering Okay, number two is feature engineering. or feature extraction, we can say. Yeah, same, right? Then number We third have is to algorithm for that. yeah. Now here is the algorithm deployment, or you can say Yeah, designing in. whatever algorithm we have to Yeah, apply to our data. yeah, true. And then at the end, you're gonna have the output correspondingly. Either you're classifying or you're regressing, right? Okay. So yeah, she's right that these are the basic steps: pre-processing, feature engineering, algorithm deployment, and then that is the output. Now, what pre-processing is? Right? Pre-processing is, for example, okay, let's say you have the data, anything which is not the data, you call it as noise. For example, if I'll simply call you that we have we have pulses at our home, so whenever we cook them, we try to find out all the pulses, we clean them, we pre-process them before processing it to make it, before the process of its conversion to a eatable dal. So this is a pulse. Then pre-processing is removing the unwanted things. That could be noise, that could be anything else. So if I'll get a training from my mother, let's say, so any of the thing which is not similar to pulse, that is to be out, right? So when I was young, so I have taken this thing so by my heart that if any other color pulse is also there, I'll keep it out. So that is the failure, because fine, that is also pulse category. So this is what ML model can do very well. So then I got the training with the time that if we have any of the other pulse, let's say of any other color, that is not a noise to it. So you should be very sure that what is the noise to your data. For that, you have to work on literature, or you have to work with the experience of applying different models, finding the accuracy. Because if you're uh, pre-processing, if you're removing the required data, at the end you'll have the less number of the samples with you, and then you have to deploy more number of the samples. So in this way, you have to work on the data very well. Then is the feature engineering means कि अगर मैंने इस पूरे डेटा को किन्हीं 4 या 3 पैरामीटर से रिप्रेजेंट करना हो, व्हाट कुड दैट बी? दोज आर द फीचर्स ऑफ द डेटा, मींस ट्रेट्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके क्लास में मार्क्स आते हैं, जब आप उसको एज अ टीचर when you have to portray कि मेरा रिजल्ट कैसा रहा, यू डोंट गो बाय मार्क्स एंड मार्क्स, देखो सर इसके 95 आए हैं, फिर एक बच्चे के 94 आए हैं. नो, we go for everybody. If we are into teaching profession, we know that we look for the Gaussian distribution result which we wish for. It comes effectively if we have done if we have followed every protocol very right. So that is true. And this is how we represent our data. And if it is लिटरेचर के साथ बिल्कुल मैच हो रहा है, कि गॉसियन है, स्क्यूड नहीं है, आपने सारी क्लास कोई तर्ज के आधार पे नंबर देके पास कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, एक बच्चे को एक टॉपिक नहीं आता था, दूसरे को दूसरा नहीं आता था, जो आता था उसमें से बेस्ट दे दिया, सो राइट स्क्यूड कर्व विल बी देयर.
अगर आपने सब बहुत टाइट चेकिंग की है तो लेफ्ट skewed will be there. So this can't be, this is a bad teaching representation example. So this is how, this features. Now अब इस डेटा को बनाने के लिए what are the features? Either some people go for the grade, आपने ग्रेड दे दिए SABCD, आप इसमें डालते हो 0 1, इसमें डालते हो आप लेट्स से 10, इसमें आप डालते हो 11, इसमें आप डालते हो 15, इसमें आप डालते हो 13. Then you have E and I's fail. Let's say I don't know how many levels do exist actually. So yeah, let's suppose this is 10 and this is again, since this is 1, आपका बच्चा फेल 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, मान लो 3 बच्चे फेल हो गए हैं. So this is way अगर आप बनाओगे इसको तो it will come like this. सो दीज आर द फीचर्स. द ग्रेड, अब आपने ग्रेड कैसे निकालने हैं? मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स से. ठीक है, आपने एवरेज लिया है या मीडियन लिया है. व्हाट आर दीज पैरामीटर्स? ऑल दीज आर द फीचर्स that can actually represent your data when you need not to put your data at the front foot always. So machine learning जो है हम इन पे लगा देते हैं कि देखो डेटा से सारे ये फीचर निकाल लो. हर बार मॉडल का इतना कंप्यूटेशनल टाइम यू हैव टू वेस्ट, है ना, इतनी एनर्जी वेस्ट होगी कि मॉडल जो है वो डेटा पे काम करी जा रहा है. हम क्यों ना मॉडल को पहले ही थोड़ा डेटा इस हिसाब से दें कि उसकी ट्रेनिंग अच्छी हो जाए. सो दिस इज फीचर इंजीनियरिंग. एमएल और डीएल में यही फर्क है सबसे पहला कि एक तो यू लैक द फीचर्स देयर. एमएल जो है वो फिर मेजर, देखो ना, आपने फीचर्स भी दे दिए, डेटा भी आपने दे दिया, सब कुछ कर दिया, तो एमएल का काम क्या रह गया? सिर्फ इन पे ही बेस्ट पॉसिबल मॉडल को ट्रेन करना, ऑप्टिमाइज करना वेट्स को, ताकि हम एक फाइनल प्रोडिक्शन करें. इसका एमएल का डेटा के साथ कुछ लेना देना नहीं है डायरेक्ट, राइट? उसमें से आपने कौन से फीचर्स दिए हैं, दोज आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू एमएल. So this is how it works in describing your data features and then applying the algorithm that can be domain specific, and then you can optimize the weights of the features or optimize the design features or acquired features correspondingly. ठीक है? Then is your ML versus deep learning. So deep learning में क्या है? This is very good example. I think आपने जब भी कोई बेसिक पढ़ा होगा तो आप इसी को देखते हो कि आपने पहले इनपुट दी, फीचर एक्सट्रैक्ट खुद किया, फिर क्लासीफाई किया, फिर आउटपुट आ गई. इनपुट इसकी ये दी. डीप लर्निंग में आप कुछ ऐसा नहीं करते हो, आप सिंपल डेटा के साथ डील करते हो, इसलिए इसको पैटर्न रिकॉग्निशन में ज्यादातर डाल दिया जाता है कि आप डेटा का जो पैटर्न है वो आप रिकॉग्नाइज करते हो. और उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए आई टोल्ड यू हमने करना क्या है, नथिंग बट हमने क्या करना है, डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी को ब्रेक करने की कोशिश करनी है. we will try to break the complexity of the data as simple as we want. just imagine आपने फैक्टराइजेशन करनी है, आपके पास S7 है, तो आप सबसे पहले S मान लो 6 5 और 4 पे लेके आए, फिर 6 को आगे 5 और 4 पे, 5 4 3, इसको 5 3, इसको फिर आगे, फिर इसको आगे लेके जाना है. सो ये जो मैं चीज कर रही हूँ, दिस इज ऑल व्हाट, दिस इज दिस लेयर्स. इसमें आपकी एक इनपुट लेयर हो गई, एक आउटपुट लेयर हो गई. बीच वाली लेयर्स को इसलिए हिडन लेयर बोल देते हैं बिकॉज ये सबका अपने मॉडल का मेथड हो जाता है, इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता. हाँ, लेयर्स डिसाइड करनी है, एक रैंडम आप फॉर्मूला ले सकते हो, बिना फॉर्मूला के भी हो जाती हैं, वो डिपेंड करता है कि किसकी प्रॉब्लम कितनी कॉम्प्लेक्स है और आप उसको कितने डिविजन्स में क्रिएट कर रहे हो. सो दिस ऑल इज द मैपिंग ऑफ द इनपुट टू द आउटपुट सो दैट हम उसको ट्रेन करें. अब आपकी मर्जी, आपने कैसे उसको ट्रेन करना है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. दिस इज जस्ट रिड्यूसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी. अब कॉम्प्लेक्सिटी हो कैसे सकती है कि डेटा लीनियर है, नॉन लीनियर है, ठीक है, उसमें अब इसमें से आपकी कोई लेयर जो है क्या पता फीचर पे काम कर जाए, क्योंकि जब आप डिजाइन करते हो कॉम्प्लेक्सिटी ब्रेक करने के लिए आप सिंपल यही लगाते हो, मिनिमम मैक्स मेथड, है ना, पूलिंग लगा दी आपने कि वही डाटा पूल हो जाए. पूल मीन्स इकट्ठा हो जाए मिन मैक्स में, मिनिमम और मैक्सिमम सैंपल. एवरेज पूलिंग लगा दी आपने. एवरेज पूलिंग क्या करती है कि एवरेज वैल्यू दे देगी आपको, करना वही है हमने, बट इसमें क्या है कि डिफाइंड स्टेप्स हो जाते हैं और ये डिफाइंड स्टेप एक पर्टिकुलर लेयर के हो जाएंगे. तो आपको बस एक लेयर ऐड करनी होती है. लेयर इज दैट यू हैव टू प्रोग्राम, you have to call the functions, they are already designed. अगर आप इसको एज एन एप्लीकेशन परस्पेक्टिव यूज कर रहे हो, अगर आप इसको एज अ मॉडल आर्किटेक्चर परस्पेक्टिव के लिए देख रहे हो, तो इट मीन्स आपको कुछ ऐसा मेथड देना पड़ेगा. वो मेथड देने के लिए आपको मॉडल डिजाइन करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि हाउ टू वर्क ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डेटा, हाउ टू क्लब द डेटा एक्चुअली, सो दैट वो डेटा उसके फीचर्स जैसा ही लगे सारा. ये कुछ नहीं कर रही है, फीचर इंजीनियरिंग ही हो रही है. एक तरीके से बहुत सारे डेटा को कंपाइल करके हम बहुत एंड में आप आते आते अगर आप कोई साइज देखोगे इमेज का,
कैसे देते हैं हम, जैसे 225 क्रॉस 225, हमने इस पे 3x3 का फिल्टर चला दिया, ठीक है, इसको 3x3 का फिल्टर चला के रिड्यूस कर रहे हैं। अब देखना CNN लगाने के बाद आउटपुट का साइज जो आएगा वो क्या आएगा, एट द एंड हमारे पास 1 क्रॉस या जितने भी आपकी क्लासिफिकेशन सैंपल्स हैं वही बचेंगे, ठीक है। सो वी आर एक्चुअली रिड्यूसिंग द डेटा। हाँ जी ठीक, हाँ जी, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक। So this is like this, and then is the ML versus deep learning. So deep learning applies to multi-layer process for learning rich hierarchical feature. देखो features ही learn हो रहे हैं in the end or in short, whereas multi-layer process means हमें rather than human involvement हम data को कह रहे हैं कि अपने आप से learn करने की कोशिश करो, different different methods हैं, तो उस चीज़ को learn कराने के लिए फिर हमें hit and trial और कितने methods लगा के देखना पड़ता है मॉडल को कि पहले ये लगाया था आउटपुट कितनी आई, फिर ये लगाया आउटपुट कितनी आई, फिर ये लगाया आउटपुट कितनी आई। सो दीज आर लाइक इट अप्लाइज अ मल्टी लेयर प्रोसेस फॉर लर्निंग, एंड द इनपुट इमेज पिक्सल इज लाइक दिस फॉर एग्जाम्पल। उसमें से अब ये चीजें जो हैं ये सब क्या है, आपने इनपुट एक पिक्सल इमेज दे दी, जब आप इसको बार बार प्रोसेस करोगे इमेज के हिसाब से उसके फीचर्स जो होंगे ना उसी के हिसाब से यू कैन हैव द लेयर्स करस्पॉन्डिंग टू दैट। सो जैसे एजिस के लिए एक एल्गोरिदम बन गई होगी कि जो सिर्फ एजिस को लेके आएगी, ठीक है, उसको जैसे हम बोल देते हैं लो लेवल फीचर, लो लेवल फीचर में ग्रे स्केल पे उसने दे दिया, फिर हाई लेवल फीचर में उसने कलर डिस्टिंक्शन कर दी और कोई पर्टिकुलर था, फिर देखो उससे हाई लेवल फीचर्स में आके आपको दिखना शुरू होगा कि ये पंखा है, ये कोई बैट है, या ये कोई शीट है, ये कर्टन जैसा लग रहा है, ये विंडो उसने क्लासीफाई कर दी है, रैक क्लासीफाई, टेबल, ये और रैक्स, विंडो पैन, ठीक है। सो दिस, तो देन इज अ ट्रेनेबल क्लासीफायर। अब क्लासीफायर आपको बता देगा कि यहाँ अलग अलग है और आप इसमें क्या कर सकते हो, अपनी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कि इस रूम में क्या क्या पड़ा है, राइट। जैसे वो बड़ी अच्छी गेम आती है कि यू नो जैसे हम वो पजल सॉल्व करते होते हैं कि दो दो इमेजेस दी होती हैं, यू कैन मेक अ वेरी गुड गेम आउट ऑफ डीप लर्निंग यूजिंग दैट। दो इमेजेस दी हैं, जैसे ये सूरज, ऐसे पहाड़ दिया, मान लो सूरज दिया, ये नदी बह रही है ना, जैसे यहाँ सूरज के यू हैव दिस, इधर सूरज बना दिया, उसके दो ही डंडे लगाए, और फिर पूछते हैं ना न्यूज़पेपर में आते होते ही कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू इमेजेस। सो दिस इज, यू कैन मेक इट अ डीप learning based game like that, right? So in this way you can train the data, but it will be trained on very rich data. First of all, definitely the data, देखो data कितना complex है। अब ये भी it looks like a leg, it looks like a wooden leg, और ये जो पीछे पड़ा देखो ये भी एक wooden leg की तरह लग रहा है। सो और जो जिस पे कर्टन टंगा हुआ है देखो ये भी एक रॉड है ना, तो ऑल आर रॉड्स, बट इसको ये क्लासीफाई करके अगर बता दे कि हाँ यहाँ पे कर्टन्स हैं यहाँ नहीं है, कुछ वो वाले फीचर्स सारे हाई लेवल के। सो हाउ इट विल वर्क विद दैट, दैट इज ऑफ utmost importance, right? Then is, why is deep learning useful now? Of course it is useful because it can provide you more flexible learnable framework so that you can represent your visual, text and linguistic data, and that can be learned in the supervised and unsupervised manner. That depends upon whether you have the input column with you or not, or only the output column is there. So that could be there. That supervised or unsupervised concept will be there, but now the approach is deep learning. So deep learning can actually represent a very effective end-to-end learning system because human involvement will be zero. Human involvement will be zero in this. Then it requires definitely large amount of the training data. अगर आप कहो कि एक image से ये सब समझ ले कि this is a room, then it is very difficult. You have to supply a very large pictures of this room. आप रोटेट करके दो, आप अलग अलग तरह के यू नो लाइट्स शेड्स में दो, डिफरेंट डिफरेंट बेड शीट्स और कवर और वॉल पेंट्स, उस तरीके से आप दे सकते हो डिफरेंट डिफरेंट हैंगिंग पिक्चर्स, just different variety of the data for this particular thing so that your data can learn on your own how it will come, right? Then it since about yeah, so this is how the DL has outperformed other ML techniques. Initially it was applied to vision and speech methods, then NLP, and then now it has covered to the other applications as well. So NLP is natural language processing. So natural language processing was the different branch, but now deep learning and NLP, they have been combined in a very good model. If
if you are working, if you are recent researchers, I think then you should go with the transformers. If you're like yet to start that how to work with the deep learning, that is good. You can, creating a code for the existing things will not work. You should go for the Google Colab. You should know how it works. Recent things are transformer models, so they are working like very good when it comes to deep learning methods. And the transformer models are now combined with NLP, right? For NLP, let's say we have BERT analysis and all the various other methods are there. So you can go with that. So this is the combination, the recent combo, which is actually working on variety of the data. You should look for the data type, data nature, what are the features you are expecting, what is the output you are expecting, search for the papers, find the literature, find the terms that what are working best in this, and you can work on that, right? So this is the concept. Now is the representation power of deep learning. So when the neural networks have only one hidden layer, then you can make them as, to approximate anything if it is having at least one layer. So given if you have any continuous function, let's suppose if you have to represent it mathematically, so then there will be at least one hidden layer which has hidden layer will be there whenever you have the nonlinearity. Please understand, the non-linearity in the data will make you keep on adding the layers. I told you there only that एस की पार 7 है, नॉन लीनियर था, फिर इसको आपने बाइफरकेट किया एक लेयर में, फिर अभी भी नहीं हुआ, फिर 2 लेयर लग गई, अभी भी नहीं हुआ, तीसरी लेयर लगी. जितनी नॉन लीनियरिटी होगी डेटा में आपका लेयर जो है बढ़ती जाएगी, राइट? सो अगर आपने इसको डिफाइन करना है किसी फंक्शन से, आपका कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन एच एक्स है जिसको आप डिस्क्राइब कर रहे हो एफ एक्स से, और कोई अल्फा मतलब एप्सिलॉन कह लो, अल्फा कह लो, कोई एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर रहा है जो कि हिडन लेयर का कॉन्सेप्ट बता रहा है कितनी लेयर्स होनी चाहिए, तो आप दोनों का डिफरेंस देखते जाओगे जब तक ये एग्जिस्ट करेगा, राइट? देयर विल बी अ नॉन लीनियर लेयर. So neural network can approximate any arbitrary complex continuous function. So they generally use the nonlinear mapping so that the inputs can be mapped to the output with the complex decision boundaries. Now see, you have to differentiate this data. But how beautifully it has given this as the separate, which belongs to this. And how beautifully these are the non, or you can say non-linearities, but the complex boundaries that has been designed. So this is things that deep learning can do. This, right? Data inside the data and bifurcation inside the data. So ये आप अगर ऐसा कुछ देखो जनरली, अगर आप मैप किसी को बनाते हुए देखते हो, तो कोई अगर लेट्स सपोज दिस इज द मैप है ना, कुछ उसने ऐसे लैंड बनाया, उसमें आपने ऐसे डॉट करके, यहाँ सारा सी है, ये सारी लैंड है, तो एक डॉट करके ऐसे इस पे ब्लू कलर डाला हुआ कि नहीं दिस इज ऑल्सो सी. दैट इज चलो ह्यूमन मेड, बट कल को आपको डीप लर्निंग बेसिस किसी कंट्री का कोई न्यू प्लैनेट का मैप देखना हो कि व्हाट इज द वाटर लैंड, व्हाट इज द कल्टीवेशन लैंड, और व्हाट इज देयर इन दैट, you can't do it manually, or you can't you have to capture the satellite images and then you have to work on the deep learning model, right, where you can actually work with the data, you can actually work on the samples, that how it will look like, right? So अब राइट, न्यूरल नेटवर्क्स थे, दीज आर द न्यूरल नेटवर्क्स बेसिक. अब न्यूरल नेटवर्क का भी यही कंसेप्ट है कि हिडन लेयर होगी एंड इट विल वर्क ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डेटा. अगर डीप न्यूरल नेटवर्क एग्जिस्ट करते हैं, देन व्हाई वी नीड डीपर न्यूरल नेटवर्क्स, मोर डीप, because deep neural networks, they can work better in the empirical observation. Mathematically, their representation power as one layer NN. So when you represent it, deep learning has different NN layered network, और NN के पास अपनी एटलीस्ट एक हिडन लेयर होती है. तो ये न्यूरल नेटवर्क का कॉम्बिनेशन है. अब आपने न्यूरल नेटवर्क के कॉम्बिनेशन को करना कैसे है वो आप पे डिपेंड करता है. इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे कैसे कंबाइन करना है. अगर आप देखोगे CNN, वेरी बेसिक मॉडल, उसमें क्या हो रहा है, कन्वॉल्व हो रहा है. और कॉन्वोल्यूशन किसने नहीं पढ़ा होता इंजीनियरिंग में? इन ईदर ऑफ दी सब्जेक्ट आई थिंक यू वर्क विद द कॉन्वोल्यूशन थिंग. Signal system, agar if you all are from background ECE, I think signal system is all about कितनी देर उसमें convolution ही चलता रहता है when you work with the data. 3 steps होते हैं उसके, है ना? 3 steps क्या होते हैं? जैसे XT और HT है, आपने इनका convolve करना है. क्या करोगे? तो सबसे पहला होता है कि HT का हमने
उल्टा लेना है, फिर हमने इसको एक सैंपल से डिले कर देना है, फिर हमने इनका सम लेना है एक्स टी इंटू एच ऑफ माइनस टी माइनस वन, इनका क्या करना है समीशन सम। अब टी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है वो आपने देखना है। सो कोई भी पूछे कि व्हाट इज अ कन्वोल्यूशन, इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस। पहले उसका उल्टा लेना है, फिर उसमें सैंपल का डिले करना है, और फिर उसको क्या कर देना है मल्टीप्लाई करके सम करना है सैंपल के साथ। तो सम इज द लास्ट स्टेप। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ आपने इन न्यूरल नेटवर्क्स को आपस में कैसे कंबाइन करना है, दैट विल डिफाइन द मॉडल सिंपली। So if it is convolving, we have the convolution neural network, right? So introduction to neural networks. If मैम एक बार प्लीज ये स्टेप रिपीट कर दें, ये 3 स्टेप जो अभी आपने बताए हैं। हाँ, इन द कॉन्वोल्यूशन बेसिकली जैसे आपके पास आप सिग्नल सिस्टम की कोई भी बुक ले लेना इलेक्ट्रॉनिक्स की, जैसे ये एक्स टी है और अनदर फंक्शन इज एच टी। ठीक है, एक्स टी हम जनरली बोलते हैं इनपुट फंक्शन को। अगर आप लैपलेस वगैरह थोड़ा सा पढ़ा हो आपने, तो एक्स टी जो होता है वो एक्सेस आ जाता है एस डोमेन में। हमने आउटपुट ढूंढनी है वाई टी। ठीक है, वाई टी क्या होगी यहाँ पे वो मुझे ढूंढना है। अब मुझे बताइए सैंपल्स की वैल्यू है। ठीक है, तो अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो इस तरीके से, अगर मान लो ये सैंपल डेटा तो मैं पॉइंट्स मार्क कर लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस दिस दिस, ये डिस्क्रीट में हो जाएगा, अदरवाइज कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा। मान लो ये टाइम 1 है, टाइम 2 है, दिस इज टाइम 3। उसी तरीके से ये टाइम 1 है, दिस इज टाइम 2, दिस इज टाइम 3। तो आपने कन्वॉल्व करना है। एच टी जो होता है ना, ये होता है ट्रांसफर फंक्शन, इसको आप एच एस कर सकते हो। और जो वाई टी है ये आउटपुट होगी। अगर आप एस डोमेन में लिखोगे तो ये ऐसे आता है। अगर आपने पढ़ा हो कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, एच एस, ये होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो जब ये एक्सेस इधर जाता है ना एच एस के साथ, तो हम कहते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन जो है एक्चुअल में कन्वॉल्व होती है टाइम डोमेन में। इधर तो ये मल्टीप्लाई हो गए, अगर मैंने वाई टी की फॉर्म में लिखना हो तो दे विल बी कन्वॉल्विंग इन द टाइम डोमेन, दैट विल बी इक्वल टू वाई टी, दिस इज इक्वल टू वाई टी। अब कॉन्वोल्यूशन क्या है, जब आपने इसको निकालना है तब क्या करना है, एच टी का सबसे पहले ऑपोजिट लेना है, एच ऑफ माइनस टी। व्हाट विल दैट बी, टी इधर है, माइनस टी नथिंग बट अ मिरर इमेज ऑन द ऑपोजिट साइड, तो एच टी इधर को आ जाएगा, ये हो गया एच ऑफ माइनस टी। ठीक है, मान लो यही सेम माइनस टी वन, माइनस टी टू, माइनस टी थ्री, लाइक दिस। नंबर 2 होता है आपने इसको एक सैंपल से डिले करना है, मतलब माइनस टी माइनस वन। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 करूं तो ये क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू -1। मतलब जो वैल्यू 0 पे थी, मान लो यहाँ कुछ वैल्यू थी, वो कहाँ से शुरू होनी चाहिए, -1 पे, 0 पे कुछ नहीं होगा। एक एक वैल्यू शिफ्ट कर दो, मतलब ग्राफ जो है वो मेरा -1 से शुरू हो जाएगा ऐसे, -t1 -t2। अब जो वैल्यू 0 पे थी वो यहाँ शिफ्ट हो गई, और यहाँ थी वो यहाँ शिफ्ट हो गई, ऐसे ऐसे एक एक वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आपने जब कन्वॉल्व करना है तो एक्स ऑफ टी वन, सैंपल साइज उतना ही रहेगा, एक्स ऑफ टी वन को मैं 1 कंसिडर कर लेती हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता लग जाए। देखो एक्स वन इंटू एच ऑफ क्या आएगा, -t -1। अच्छा, अब आपका t जो है वो क्या हो गया 1, तो यहाँ 1 पुट करते हैं हम, -1 -1। यू नो जो वैल्यू -1 पे थी वो कहाँ चली गई, -2 पे। तो इन दोनों का कन्वॉल्व होके, दिस इज द प्रोसेस, वो दोनों कॉन्वोल्यूशन, इसमें आपने इन ऐसे प्रोडक्ट निकालते जाना सारी वैल्यूज का, एट द एंड इनका सम आ जाएगा, एक इनको समीशन में डालना है, जो एक आउटपुट आ गई वो कन्वॉल्व होके आ जाएगी। अब एक आउटपुट नहीं, ये हर एक सैंपल के लिए आएगी। देखो जो ये 1 पे है तो y ऑफ 1, y ऑफ 2, y ऑफ 3, उसी तरीके से आपकी हर लेयर की आउटपुट आएगी कि इस न्यूरल नेटवर्क का इस न्यूरल नेटवर्क के साथ कन्वॉल्व करना है। इसमें कितनी सैंपल है, 10 सैंपल है, इसमें कितनी सैंपल है, 10 सैंपल है। बस एक मेथड है कि आपको वो एक को पॉजिटिव साइड में लेना है, एक को नेगेटिव साइड में लेना है, फिर उनका कन्वॉल्व करके आउटपुट, फाइनल आउटपुट 10 सैंपल्स आ जाएंगी, फिर इसकी 10 सैंपल इससे कन्वॉल्व, इसकी 10 सैंपल इससे कन्वॉल्व, सो लाइक दिस इट विल कीप ऑन वर्किंग। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ अ कन्वोल्यूशन। नाउ अगर आप न्यूरल नेटवर्क का बिल्कुल बेसिक देखोगे, इफ यू वर्क विद द न्यूरल नेटवर्क, सो यू हैव द
ये सबने ज़्यादा मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा थीसिस इसी में निकले होंगे पहले स्टार्टिंग में कि व्हाट आर दी हैंड रिटन रिकॉग्निशन फंक्शंस, यू हैव टू फाइंड देम एंड द इंटेंसिटी जस्ट दे विल वर्क ऑन दिस फीचर कि हर पिक्सल की कितनी इंटेंसिटी है उसी को उन्होंने एलिमेंट के तरीके से दे हैव कंसिडर्ड दैट एंड वंस दैट इज डन देन दे एक्चुअली डू द क्लासिफिकेशन एंड दैट पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन इज done with the help of the neural network, right? So this is the image size और आपने उसको उसी तरीके से उतने एलिमेंट्स ले लिए उसके कि 256 वैल्यूज थी, सारी वैल्यूज ले ली, फिर देखा ये वाइट में है ये एलिमेंट किस में है, ठीक है? तो इंक है 1 है, नो इंक है 0 है, आपने क्लासीफाई कर दिया। जहां जहां इंक है वो 1 में आ जाएगा, जहां जहां नहीं है वो 0। उसके बाद कंपेयर करोगे आउटपुट के साथ। सो दिस इज द आउटपुट। सो ईच डायमेंशन विल रिप्रेजेंट द कॉन्फिडेंस ऑफ द डिजिट। दिस इज द कॉन्फिडेंस लेवल कि क्या कॉन्फिडेंस लेवल है उसका, 1 है कि 0 है, या इज इट 1, इज इट 2, इज इट 0, अगर हमने क्लासीफाई किया है, ठीक है? हर एक को आपने वेट दे देना है। अगर तो आउटपुट पता है, देखो आउटपुट हमने काउंटिंग देनी है, क्या आपने 0 से 9 तक काउंटिंग देनी है? हाँ जी, 0 से 9 तक देनी है। इंक है तो 1 दे दिया, नो इंक है तो 0, ये वेट्स दे दिया आपने। उसके बाद आउटपुट लेके आने के लिए कि किसकी आउटपुट लगेगी, ठीक है? जिस जिस हिसाब से आपने 2 का पहले कोड कर दिया कि अगर 2 है तो हर एक को इतने मल्टीप्लाई बाय वेट कर दे, आउटपुट वो आ जाए। अगर 0 है तो 0.2 के साथ जिसका वेट ज्यादा आ जाएगा वो आपका डिजिट हो जाएगा, दैट विल बी योर डिजिट। सो द इमेज इज 2। तो हूसोएवर, जैसे इंक वाले ये काउंट करेगा ना, इंक पैटर्न से काउंट करके, जैसे उसमें आपने एवरेजिंग लगा दिया, उसके बाद इट विल काउंट के कितने मैक्सिमम 1 आए और ये एवरेज किसका ज्यादा आया, जिसका एवरेज ज्यादा आएगा ऑफ कोर्स के 1 कितना कवर करेगा, 0 कितना कवर करेगा, डिपेंडिंग अपॉन दोज पिक्सल्स, राइट? सो जिसकी आउटपुट ज्यादा आएगी उसको हम वेट जो है उसका ज्यादा आ जाएगा, उसके बेसिस पे वो इमेज के आउटपुट के साथ कंपैरिजन कर लेंगे। सो दिस इज हाउ द फंक्शन एफ इज रिप्रेजेंटेड फॉर न्यूरल नेटवर्क कि 256 जो इमेजेस थी, अगर हमने 0 से लेकर 10 तक काउंट करना है तो देखो 256 टू 10 तक लेके गया ये फीचर्स को, 256 टू 10 तक। दिस इज व्हाट इट हैज डन। ये मैं बोल रही थी कि इतने नॉन कॉम्प्लेक्स और नॉन लीनियर डेटा, सॉरी कॉम्प्लेक्स और नॉन लीनियर डेटा को ये लीनियर में कन्वर्ट करके एट द एंड आपको ये आउटपुट दे देगा कि दिस इज दी 2। अगर आपने इसको देखना हो सिंगल न्यूरल कैसे मैप करता है, सो दिस इज द इनपुट, दिस इज द वेट, इनपुट वेट, इनपुट वेट, एंड दिस इज सम इंटरसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखो कई बार क्या होता है कि इनपुट कुछ भी ना हो, आपने कोई रैंडम इनपुट दे दी, तो आपका मॉडल फेल नहीं होना चाहिए। द मॉडल शुड गिव सम रैंडम आउटपुट ऑल्सो। उस चीज के लिए वी हैव अप्लाइड इट एज एन इंटरसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाई, मुझे पता है अगर C0 लाइन यहाँ से शुरू होगी, अगर मेरे पास डेटा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये ना हो कि ये क्लासीफाई नहीं कर रहा, फिर क्या हुआ कि ओरिजिन से शुरू नहीं हो रही, वो यहाँ से शुरू होगी। सी का काम है ये बताना कि what is the intercept, right? So what is the intercept actually? This is the major work of this, and then is the how is the input and how is the output and how it is actually working with the input and the output. These are the weights. Then you give the bias or the intercept, that for each weight you give a particular value, and then you have the output corresponding, and then is the activation function. तो एक्टिवेशन फंक्शन अगर मैं बात करूं, एक्टिवेशन फंक्शन का काम यही है कि जितनी भी z की आउटपुट्स आएंगी वो नॉन लीनियर ना हो, उनको हमने फॉर एग्जांपल जैसे आपका ना पल्सेटिंग सिग्नल आ जाए ऐसे, हम क्या करते हैं कि ठीक है ये 0 से ऊपर है ना, सारे ही 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत इंस्टेंटेनियस सैंपल्स आ रही हैं ऐसे, तो हमने उसको क्लासिफाई कर दिया, रेगुलराइज कर दिया कि ठीक है दिस इज 1। एक्टिवेशन फंक्शन का बस ये काम है, वो देखेगा कि सैंपल्स कितने हैं ताकि हमारी आउटपुट जो है वो आराम से बाइफरकेट हो जाए। यहाँ तक तो हमने मॉडल लगा दिया, सब कर दिया, वेट वूट लगा दिए। अब जैसे इसका क्या काम है, मान लो ये वाले इस फंक्शन में क्या आ रहा था, 0.7, 0.1 एंड 0.2। तो एक्टिवेशन फंक्शन क्या करेगा, वो देखेगा कि थ्रेशोल्ड कहाँ लगाना है, क्योंकि ये देखो 0.1, 0.2 सारे एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे अगर देर इज नो अदर डिफरेंस। जिसका मैक्सिमम वेट होगा एक्टिवेशन फंक्शन ने बाकी को सप्रेस कर देना है। देखो एक्टिवेशन क्या होता है, एक्टिवेशन इज
बेस्ट एग्जाम्पल जैसे कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट इज ऑल्सो एन एक्टिवेशन फॉर एन इक्वेशन। उसने क्या करना है कि मान लो कार्बन डाइ, अब मुझे भूल गया केमिस्ट्री तो, यहाँ मुझे इतना पता है कि कुछ ऐसे कैटलिस्ट लिखते थे कि वो एक आधे एंजाइम से रिएक्शन को फास्ट कर देता है। तो अब वो क्या है कि ये किसी ना किसी से, जिसका वैल्यू ज्यादा होगी, जो वो एंजाइम प्रेजेंट होगा जिसने, जिस वजह से वो इक्वेशन हो रही है, तो उसी को फास्ट करेगा ना, बाकी को सप्रेस कर देगा। उसी तरीके से एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है कि जो मेरे को आउटपुट चाहिए, इट विल सेंस कि आउटपुट डेटा क्या आ रहा है, उसी को ही आगे बढ़ने देगा, बाकियों को वो रोक देगा। ठीक है, बाकियों को आगे नहीं जाने देगा, कॉरेस्पॉन्डिंगली उसकी आउटपुट आ जाएगी, बाकी सबको उठा के दूसरे कैटेगरी में डाल देगा, जिस जिसका वेट ज्यादा आएगा उसको उठा के एक कैटेगरी में डाल देगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो न्यूरल नेटवर्क विद वन हिडन लेयर, ये एक हिडन लेयर है और एक आउटपुट लेयर है, एक इनपुट लेयर है। बट ये ध्यान रखना कि मैपिंग एक इनपुट की हर एक न्यूरॉन से होनी चाहिए। अच्छा, दिस इज इनपुट, ये जो गोले से इनको न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन इसलिए बोल देते हैं क्योंकि सिंस इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द ह्यूमन माइंड कि इंटेलिजेंट है लाइक अ ह्यूमन माइंड, सो दैट इज हाउ। वेयर न्यूरॉन जो है वो किसके बेसिस पे होता है, वेट एंड बायस। ठीक है, आपने वेट देना होता है न्यूरॉन को और उसका उसका बायस सेलेक्ट करना होता है। ये रहा W1 B1। सो हिडन लेयर का ये हो जाएगा एंड दिस इज योर आउटपुट लेयर। This is how you can make it, and then could be the activation function कि कितने लगने हैं ये, this is the formula that how you can decide कि कितने न्यूरॉन्स होने चाहिए, ये कितने आपके बायसेस लगेंगे और इसमें से कितने पैरामीटर्स जो हैं उनको हम लर्न करा सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। एंड अगर आप सिंपल टिंकर डेटा सेट पे भी देखा होगा आपने कि टिंकर पे कैसे डेटा सेट्स जो हैं वो न्यूरल नेटवर्क के साथ आप ट्राई करते हो, वो कैसे प्रॉमिस कर, मतलब कैसे प्रॉमिस करता है कि हाँ जी वी विल ब्रेक इट एंड यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द फीचर्स वट एवर यू हैव फॉर द डेटा टू फीड इन टू द आउटपुट। सो इट इज लाइक दैट। So it works on the data, right? So you can also select the ratio, the batch size. So this way we can, we have the different elements for the neural network where you can work with. When it comes the deep, the neural network now comes the deep. So in case of deep, you have the layers with it, or you can also call it as multi-layer perceptron. Perceptron has only one hidden layer. This was the first neural network model that has been designed. Markov was also there, but perceptron model is very known model, right? So each neuron is connected to all the layers in the succeeding न्यू। इसके लिए, इस लेयर के लिए ये इनपुट लेयर है, इस ऐसे ऐसे करते हर एक के लिए एक इनपुट लेयर बनती जाएगी। ठीक है, अगर आपने सिंपल एक टॉय एग्जांपल लेनी है, सो आपने आउटपुट देनी थी उसकी कि अगर ये आपके पास दो इनपुट्स हैं 1 and -1, आप इनको ट्रेन कर रहे हो, तो हाउ दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड। सिग्मॉइड फंक्शन यू हैव सीन दैट हाउ द आउटपुट्स आर कमिंग। सो इन दिस वे यू कैन ट्रेन देम, बट यू कैन प्रोवाइड द वेट्स ऑल्सो कि किस वैल्यू पे कौन सा वेट आना चाहिए। सिमिलरली आपकी इसी एग्जाम्पल को आप कंटिन्यू करके आगे लेयरिंग पे ले जाके यू कैन फाइंड कि व्हाट कुड बी द आउटपुट वैल्यूज, राइट। उसी तरीके से अब जैसे एक्टिवेशन फंक्शन होता है ना, तो सॉफ्टवेयर मैक्स लेयर जो है, एक लेयर डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ एक्टिवेशन फंक्शन होना चाहिए। सो बस दैट इज बेसिकली कैन बी डिफरेंट। वन कुड बी, जैसे इसमें मैंने सिग्मॉइड बताया आपको, सिग्मॉइड क्या करेगा, वैल्यूज देख लेगा कौन सी किस में है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसको आउटपुट में देखो 0.62 0.83 वैल्यूज डिफरेंशिएट कर दी। सिमिलरली सॉफ्ट मैक्स भी इसी तरीके से आउटपुट प्रोवाइड करेगा। अ लेयर विद द सिग्मॉइड एक्टिवेशन यू कैन हैव डिफरेंट आउटपुट्स, देन यू कैन हैव द सॉफ्ट मैक्स। ये वेटिंग का क्राइटेरिया बता रहा है कि इसके पास एक आउटपुट आई, दूसरी आई, तीसरी आई, आपने सॉफ्ट मैक्स लगाया, उसने काम क्या करना है, तीनों को ऐड करके जो भी उनके आउटपुट आएगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसके आउटपुट दे देगा। ठीक है, एंड देन जो इसकी आउटपुट आएगी इससे इसको डिवाइड कर करके इनकी वैल्यूज आएंगी, उसके हिसाब से क्लासेस डिवाइड हो जाएंगी। दिस इज हाउ दे वर्क। ठीक है, ये वैल्यूज हैं, आप देखना इसको ऐड ऑन करके इस तरीके से यू कैन हैव दी वैल्यूज फॉर दी आउटपुट। अब जैसे मशीन लर्निंग में मैंने कर्नल वर्ड बताया था ना, उसी तरीके से यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन आता है जब आपके हिडन न्यूरॉन्स को आपने कन्वर्ट करना हो, प्रॉपर की बाउंड्री बनेगी कहाँ, ये करता है वो काम कर्नल की जगह। कर्नल करता है मशीन लर्निंग में, एक्टिवेशन फंक्शन करता है यहाँ पे। So this is the difference between both of them, right? So in this way we can design the model correspondingly. These are the activation functions that actually work in the deep learning. We can have many of them. Right now what I am left with is that how we can basically train. It's a very good topic and I hope in future when we will be together
I'll try to explain that how we can actually train them with each particular activation function और कहाँ कौन सा activation function लगेगा. Definitely, I'll explain all the methods for this. I hope the perspective is clear. You know that how the things are going to work. So this was the major motive, because from a session you can't have all the things in one, platter. You can have the perspective. So whatever is the problem, definitely you can reach me out on the email. And in the future also, if we have any of the session, then I'll try to continue with the same. If there is any query on your end, please, you can proceed with that. Good afternoon, ma'am, Dr. Tanu. Hi, sir. Good afternoon. Yeah, it was a wonderful session. You have plenty of knowledge that you have discussed to us. Thank you very much. We're working on machine translation system, and we have tried using deep learning techniques. Okay. And we trained the system on 2.5 lakhs instances, parallel data, but Okay. and that was the manually created. But our observation is that because nothing is in our hands when we are doing the training, Hmm. and we are just providing the data, it is extracting the features automatically and everything. Right. So the results are very unpredictable. Okay. That It's that so is inaccurate. So hmm. how can we improve the results? Sir, whether the data is standardized data or you are collecting it on your own. No, we are manually creating it. Okay. It's too accurate. I'll say it's too accurate. Since you are deploying it directly to the model, first of all, I would suggest you to work on the features of that particular data. Like what could be the because you have to read the data. Machine is just like MATLAB है, for example, right? आप MATLAB में कोई भी plotting की command दोगे, उसने तो plot कर ही देना है. अगर आपको पता नहीं है कि ये line plot है, bar graph है, या ये क्या दे रहा है, या outlier ही बताई जा रहा है हमें, है ना? We don't know. तब तक यू कांट वेरीफाई. हम कहते हैं कि मैटलैब इज अ ब्लैक बॉक्स. आप कुछ भी इनपुट दोगे ये चलेगा ही चलेगा, लेकिन इफ यू डू नॉट हैव द प्रॉपर लिटरेचर अबाउट द डेटा, पहले आप उसका कोई स्टैंडर्ड डेटा देखो. अगर इफ दैट इज अवेलेबल, ट्राई टू रिप्लेस दैट विद दैट, देन मेक योर डेटा एज अ ट्रेनिंग डेटा. आपको पहले सॉरी टेस्टिंग डेटा, जो भी डेटा है आप उसका पहले स्टैंडर्ड डेटा चेक करो कि कैसे इनपुट्स को बाइफरकेट किया हुआ है. इफ नॉट अवेलेबल, आई वुड रेदर सजेस्ट, rather than putting it into the deep learning, आप उस पे पहले मशीन लर्निंग अप्रोचेस के साथ लिटरेचर में जाओ. फॉर एग्जाम्पल आई डेटा सेट है आपका कि आई के कौन कौन से फीचर्स निकल के आते हैं, ताकि आउटपुट में हमारी ये प्रॉब्लम या डिजीज डिटेक्ट हो जाए. अगर आप अपने डेटा को नहीं रीड करोगे, मशीन ने तो आउटपुट दे देनी है कोई भी, और वो रैंडमली इसलिए देती है बिकॉज आपका मॉडल ट्यून नहीं है, लर्निंग वेट आपने डिसाइड नहीं किए. और एक चीज और, जब भी आप गूगल के लैब पे भी लेट से आपने कोड लिखा, वेट्स जो हैं वो रैंडम सीड जनरेटर की तरह काम करते हैं. तो आपकी आउटपुट्स जरूरी नहीं हर बार सेम आए, आपको हर बार ट्रेन करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर इपॉक्स के साथ. जितना आपका डेटा आएगा आपको वही वैल्यू नोट करनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल, मैंने मॉडल बनाया, गूगल के लैब में चलाया, मैंने आज वेट्स कुछ और डिसाइड कर दिए, मॉडल ने ट्रेनिंग होनी शुरू हुई, जो मैंने आज रिजल्ट्स लेके आई मॉडल में वो कल नहीं आएंगे. दे विल नॉट स्टे द स्टेबल. थोड़ा बहुत प्लस माइनस ऊपर नीचे चलेगा. ऑल दो वी रिप्रेजेंट कि ठीक है इसकी एक्यूरेसी इतनी है इतनी है, वो एग्जैक्ट वो नहीं आती है एक्यूरेसी, बिकॉज वो चेंज हो जाती है. तो प्लस माइनस के साथ चलता है वो काम. पहले आप अपने डेटा को रीड करो, लिटरेचर से उठाओ व्हाट डेटा इज सेइंग टू यू, and then only put it into the machine. Otherwise, you'll never find out कि ये कर क्या रही है machine, right? No, ma'am, I agree with you. But my question is that as we do not have anything in our hands when we are talking about deep learning. Deep learning में you can't. You can just change the fully connected layers will remain the same. At last, you can change the activation function. You keep on changing the activation function. From that, if the results are coming, whatever you are in need of, then you can work. Otherwise, it's difficult to work with the deep learning data. Okay, anyhow, because it's a source session, can we come again with to you with my scholar if you Sure, sir. You can reach me. I'll just text my contact number here. yeah, We can thank have you. a very in deep conversation. No problem at all. I'll definitely, I'll personally prefer to look at what your machine is doing. Yeah, And yeah, this is my we have contact. applied so many things like you're talking about, but we are not getting the results for that.
So Okay, that's no why I've problem. already done. Our observation is that the results for the DL at least is very unpredictable. So, Okay. anyhow, I'll just get back to you and we'll have a long discussion on that. Thank Yeah, you. yeah, no problem. Okay, Thank you sir. very much. Okay. Okay, then if there is not a query, then I would like to leave the session. Thank you so much, Amit sir, for inviting me, and I'll thanks the FDP team of NITR Chandigarh.